Hello everyone, welcome back to Science Academy. So in this video we will discuss the another question from CPET Physics 2021. Okay, this is given by the volume of a cell in a 6-dimensional phase space is dash. Okay, so it goes 6-dimensional. मन रही था the phase space is 6-dimensional. Particle mechanics consider करछे for a single particle. Okay, according to classical mechanics. देखो बर्तमान आम गोटे ग्राफ करवा ग्राफ रे दिस इज द पॉइंट पार्टिकल. ओके, फॉर दिस पॉइंट पार्टिकल दिस वैल्यू गिव्स द वैल्यू q1. ओके, along this axis this is q means मन रही था प्लेवन दिस इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट. ओके, this is the position coordinate and along this axis I am representing this as p1. Okay, here the axis is p and p for momentum coordinate. Okay, that means we are here representing the particles position and momentum in a single graph. Okay, that means the point p is represented by position and momentum coordinates. So here we can call that the space is spanned by p and q phase space. Clear? एटी पिला माने आमे फेज स्पेस काहे कि इंट्रोड्यूस करछे बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मोमेंटम. बिकॉज आमे नॉर्मली गोटे पोजीशन को तार गोटे पार्टिकल रो कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट करथिले बाय पोजीशन कोऑर्डिनेट और पोजीशन ओनली. बट हियर we have to represent position as well as momentum as another coordinate. Okay, so this is for a single particle. That means we can say that it is the phase space. Okay, we can say that it is the phase space in which okay, phase space means quote of level this one. Okay, so this is the phase space in which the points q1 and p1 okay exist. So this is about a single particle. Now we'll come to n number of particles. Okay, suppose गोटे जगह रे n number of particles अच्छा तब आम एन नंबर पार्टिकल को रिप्रेजेंट करवा फेज स्पेस रे. ओके, से माने केमती देखा जाए. अच्छा देखो जिते आम एन पार्टिकल नौचे फॉर 3 डायमेंशनल. ओके, 3 डायमेंशनल कत देख तो ये भी आम कौन करवा पिला माने एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोमेंटम एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करिया. ईच पार्टिकल आम कौन मोमेंटम एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करिया. अच्छा जेहेतु पोजीशन कोऑर्डिनेट इट इज ए 3 डायमेंशनल वेक्टर. ओके, 3D वेक्टर मीन्स कौन रे बिकॉज position coordinate is along the x-axis that is qx, along y-axis and qy, along z-axis that is qz, as well as the position coordinate is also 3D vector because it is also px, py and pz. That means for a single particle, okay, what a single particle को जेतने आम फेज स्पेस रिप्रेजेंट करवा how many axes we need, that is 6 axes. Okay, so we can write in 3D for one particle we represent by 6 axes. Okay, in 3D for n number of particles we represent by 6n axes. Clear? That's why we can call that phase space is a 6n dimensional space. Okay, that means what is the एटी देखो पुना आउट क्वेश्चन एटी क्रिएट हला व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए फेज स्पेस, दैट इज कॉल्ड 6n डायमेंशन फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, द डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस इज 6n. अच्छा नाउ हमें वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करियो. अच्छा देखो सपोज दिस इज ए क्यूबिकल बॉक्स और दिस इज द बॉक्स एंड इट रिप्रेजेंट्स द फेज स्पेस ऑफ ए पार्टिकल. Divide the box exactly equal number of small spaces or small cells. Okay, each and individual part is called space. अच्छा देखो पिला माने होल ऑफ द टोटल क्वांटिटी कौन थिला क्यू थिला एठी कौन थिला रे क्वांटिटी को हम नउतले पी. जेहेतु आम इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल रे पार्ट रे डिवाइड करछे देखो ये स्मॉल क्वांटिटी रो वैल्यू को सपोज आम नउचे दिस इज डेल क्यू एंड दिस स्मॉल बॉक्सेस रो वैल्यू होचे केते डेल्टा पी. दैट मीन्स
जदि ये पोर्शन को मुझे एलोंगेट करूँ केमती आसिया दिस इज कॉल्ड ए सेल ओके व्हेयर द सेल रो डायमेंशन कौन अच्छी पिला माने डेल्टा क्यू एंड डेल्टा पी तो व्हाट इज द वॉल्यूम हियर the volume is equal to simply multiply delta q into delta p. This is the volume of the cell, but according to classical mechanics delta q delta p this is equals to h naught. Okay, so h naught is the dimension, it is the dimension of angular momentum. So h naught gives the dimension of angular momentum. So this is the volume of a single cell. Okay, तो जिते पे आम एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओके एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसीडर करिया चेक करो ये कौन चेंजेस हो अच्छा नंबर ऑफ फ्रीडम ओके तो फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर ईच पार्टिकल आम पे मैंने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते आसी चेक करो ओके सो जो आम पोजिशन कोऑर्डिनेट को मेंशन करोचे तो पोजिशन कोऑर्डिनेट रे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ दैट इज इक्वल्स टू 3n तो इज पार्टिकल रो एफ नंबर ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट रहिबो ओके एफ इक्वल्स टू 3n पोजिशन कोऑर्डिनेट एज वेल एज प्लस एफ नंबर ऑफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट रहिबो बुझि पारतो okay momentum coordinates that means f is called here degrees of freedom मन रहता plan f is called DOF that is called degrees of freedom okay so देखो delta q को मैं कौन लिखबी delta q1 into delta q2 dot delta q what n for n number of particles okay sorry delta q f why f because f equals to 3n बुझीपार मल्टीप्लाई पोजिशन कोऑर्डिनेट को केमती रिप्रेजेंट करिया डेल्टा p1 डॉट डेल्टा p2 डॉट अप टू डेल्टा pf मन रही था बिकॉज देर आर 3n नंबर ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट्स 3n नंबर ऑफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ए ref so this gives the volume okay तो पिला माने एठी वॉल्यूम को केमती रिप्रेजेंट करबी दिस इक्वल्स टू चेक करो डेल्टा q1 डेल्टा q2 अप टू डेल्टा qf ओके तो डेल्टा q इंटू डेल्टा p मल्टीप्लाई कल कौन दूसरी एच नॉट दूसरी तो ये डेल्टा q एफ टा अच्छी ये डेल्टा q डेल्टा p भी एफ नंबर ऑफ अच्छी जो आम मल्टीप्लाई कर दिस गिव्स एच नॉट पावर एफ सो वॉल्यूम ऑफ ए स्पेस इज एच नॉट पावर एफ दिस इक्वल्स टू एच नॉट पावर 3n because f value equals to 3n so therefore the volume of a phase space this equals to s to the power 3n this is another formula the dimension of phase space is 3n and volume is h to the power 3n but according to question this is given that this is 6 dimensional so here 6 dimensional means we can write 6n equals to 6 because the volume of the phase space is 6n dimensional but here for 6 dimensional n value equals to 1 therefore the volume v equals to h to the power 3 multiply 1 that is h cube so therefore volume of a phase space is h cube so this is the answer here the answer will be option number 1 h cube